All right, so let's start the session. Hello and good afternoon to all of you. My name is Aditi Bhatt, and I'll be taking your session on the daily legal current affairs, wherein I will be analyzing the Hindu newspaper for both 23rd and 24th May. Yesterday, due to some medical emergency, I was not able to take the session, right? So I have today's session is a little longer, and we will be covering both the day's news items, okay, legal news. All right. So because I don't want the students to miss out on anything. All right. So before we start, this is the link for my Telegram channel as well as the barcode. So you can join my Telegram channel for regular updates with regard to classes, as well as I'm also sharing the PDF of the Hindu newspaper over there, so the students who do not have subscription can also read and refer to the Hindu newspaper so that they can relate to what I'm talking about in the session. Okay, and then if you're planning to take on any of the subscription from the Unacademy platforms, then to unlock free classes and subscription discount, you can use the referral code ABCLAT. Okay. So let's start. Now these are the news highlights that we will be covering today. There are around 18 news items, right? So for yesterday and today's combined. Okay, so the first is Prime Minister extols value of Pacific Island nations at third FIPIC summit. So we will be talking about FIPIC. We have also previously talked about this international grouping before, right? So from international law point of view, this is important news for you. Then wrestlers accept WFI World this thing Federation of India. This is Wrestlers Federation of India. Uh, Wrestlers accept Wrestlers Federation of India's chief demand for narco test under Supreme Court supervision. So we'll talk about narco test analysis and the legal implications of narco test as per our Indian laws. Okay, the constitutional framework, the statutory framework, and what all judgments we've had so far. Okay, the important ones. Then the third is after DCW, that is Delhi Commission for Women, a civic body removes clause that mandated the use of acid for cleaning toilets. So here we will be looking at acid attack provisions in our Indian Penal Code. Then solidarity for peace, again another news from international law perspective. We talked previously. We've also talked about the non-proliferation treaty. Here we will be talking about a lot of various issues that have been discussed, that are being discussed in the G7 summit at Hiroshima, Japan. Okay, then the fifth news item is Antarctic sea ice cover hits many record lows. See, this this news item is basically stating the data with respect to climate change, right? But we will be focusing on the important climate change conferences that are important from your exam point of view, and what are the initiatives that India has taken as far as climate change is concerned. So that is also important, and you need to stay updated with respect to that. Okay, and then the tussle over services in Delhi, and we'll go through this entire article because this is very important. And right, also we will be talking about, just a second, we will be also referring to the next is will bring bill to link death and birth, sorry, this has to be birth data with voter rolls. Shah update NPR to enumerate self during next census. So NPR is National Population Register. Okay, so National Register for Population. So we will talk about what is NPR. And because this one, the first news item, that is will bring a bill to link death and birth data. This is in yesterday's, this was in yesterday's newspaper. And this one, the update NPR to enumerate self during next census, this was in today's newspaper, but both the news items are actually connected. That's why I have included it in today's, in the session. All right. Okay, then Delhi High Court issues notice to BBC on its documentary. Yes, so around 10,000 euro or 10,000 crore dollar fine has been imposed on BBC in the defamation suit. Okay,
right? And so we'll talk about defamation, of course. That's in IPC as well as, so we'll talk about both civil defamation as well as criminal defamation, okay, both in tort and IPC. Okay, the ninth is center seeks stricter implementation of ban on e-cigarettes. We'll talk about the e-cigarettes related laws. Okay, then the 10th is Education Ministry holds meet on Parak aimed at unifying 60 school boards. Now, there are certain we will discuss in this particular news item. See, we will be discussing about the national education policy, which we have already covered. I will be revising that with all of you. And you see, important, there are certain, for example, if there is certain new initiative, okay, so those new initiatives, the names of those new initiatives, or any particular fact related to those new initiatives by the central government under any scheme or any policy can also be asked as far as your static GK or your static legal GK is concerned, right? So it can be asked in both legal as well as legal reasoning as well as in GK. Okay, so you need to इंश्योर कि ये सारे जो ऐसे particular facts हैं, right? Parak is another new initiative. So such initiatives with their names you should remember for your static point of view. Okay. The paradox of BRICS, its new pathway. So this article itself is completely describing the BRICS and everything, the whole how BRICS has turned around. But we will then be discussing BRICS as well. The Telangana AP water dispute. So yes, the interstate water dispute we will be discussing in this news item. And the next is what is the EU's carbon border adjustment mechanism? So CBAM, right? So we will be discussing on that as well. Again, this is important from your environmental law point of view. What counts is seldom counted. How the census data remains underutilized, right? So here, this is very important news item in today's newspaper. This is related to census 2021. So census 2021 has been postponed because due to COVID, it was supposed to be, the counting and everything, the survey, everything was going on in 2020, and that's why, and because of pandemic, the exercise of collecting the census data was actually stopped, right, due to pandemic. It was first stopped. That's why we still do not have the data related to census 2021, the compiled data. The exercise is still going on, and we will be looking at this news item. Okay, what it states now. What counts is okay, did improving doing business scores boost growth? Now this is related to ease of doing business. This index is released by the World Bank every year, so we will also be looking into that. And India raises terrorism issue at G20 meet, lambasts Pakistan. So again, state-sponsored terrorism is another issue that we will be looking at. And draft of Digital India bill to be released in June, Minister. Now this is one very important act, the Digital India Act 2023. This is the proposed legislation. This will be coming in June, and this will become important for your exam point of view, from your exam perspective, because this is a new law, and it has been quite in demand because of newer technology like artificial intelligence. We have the cryptocurrency, we have a lot of digital now of course things have evolved quite a lot. That's why let's see what this legislation talks about, right? In the news item we will read about it. Then the last news item that we will be covering is India's global trade should go paperless. So Neil Bartwal. So we look into this last news item as well. Okay then. So before I proceed further, these are certain, so you can now avail Unacademy subscriptions at and 50%. You can save up to 50%, right, at 50% discount, and plus 1 month free extension. So if you use the code, you can use the code AB CLAT, right, for getting free subscription of getting 50% off on all of those subscriptions plus 1 month free extension, right? And this is valid from May 22nd to May 26th. So this is a wonderful
this scheme. Now, this is wonderful initiative by Unacademy. Now, so these few days you have, right, and you can avail subscriptions, and by using the referral code ABCLAT. Okay, so the referral code is ABCLAT here, it's given here, so you can refer to it. And I will also be sharing the same on the Telegram channel itself. Then CLAT printed mock tests. Then kickstart your CLAT preparation with an Academy 10 sectional mocks, 10 full length mocks delivered right to your doorstep. Available with all iconic in 9 months and above, plus subscriptions, right? So these are the May 2023 test series calendar. So these are the free mock tests that will be conducted in this month, and many of them have already been conducted. The next is on May 27th, right? This is the All India DULLB free mock test. So you can enroll on the Unacademy platform for free for attempting this particular mock test. And if you score really good marks, you can avail up to 90% scholarship on your subscriptions. Okay, so that's the best part. So you can crack the test, All India mock test, and then you can avail up to 90% scholarships on your Unacademy subscriptions, right? Okay. Then the level up, you can then of course join the level up batch. This is a foundation batch for CLAT, IELT, MHSET, LSAT, SLAT 2024, and right. And then you can also join the warriors batch. So the foundation batch is for students who are, let's say, in class 11th and who have started preparation and who have time, to prepare for CLAT and other such examinations. And the warrior badge is, for students who are, let's say, in class 12th and are preparing alongside their boards, or who are already pursuing another course but side by side preparing for CLAT and other such examinations. So for them, because they have limited time on their hands, you can join the warrior batch, right? And crack CUET PG Law DULLB in 30 days. You have the dates of DULLB and CUET LS already up, right? So you can join this batch as well. And this is a 30-day crash course, so you can enroll, and then in 30 days, the educators are going to really help you out in cracking the examinations. All right then, so let's start with today's sessions. The first news item that we will be covering today is related to the FIPIC summit. So as you all know, the Indian Prime Minister, he went to the Papua New Guinea, and so that's why FIPIC summit has quite been into news recently. Okay, so let's see. The small island nations of the Pacific Ocean are in fact large ocean states. This was stated by Prime Minister Modi. Large ocean states, they are not small island nations, right? Highlighting the importance of 14 members of the Forum Forum for India Pacific Islands Cooperation, FIPIC. This is the full form. In the opening session of the FIPIC summit in Port Moresby, please remember these are certain facts that you should remember. Port, Port Moresby. Okay, this is where it was conducted. Mr. Modi spoke in favor of the free and open Indo-Pacific region, and focused on India's commitment to assist the development goals of the member countries. Okay, New Delhi would continue to help Pacific Island states in every possible way. Climate change, natural calamities, poverty, famine already existed, but now new challenges are emerging as supply chains of food, fuel, fertilizers, and pharma are facing hurdles. So pharmaceutical industry, supply chains of food, fuel, fertilizer, right? All of these are the new issues that are emerging, right? And plea to India: we are victims of global power play, and we want you to be an advocate for us and sit in those meetings. So this is because India has now is now the voice of the global south. That's why you see it's very important. So what is FIPIC?
So, it is Forum for India Pacific Islands Cooperation. Forum for, as it is written here, Forum for India Pacific Islands Cooperation. It is a multinational grouping, again important from your international law point of view. Okay, so remember the summit, FIPIC summit, and it is between India and 14 Pacific Island countries. 14 Pacific Island countries. All right, just a second. Okay, and the FIPIC initiative marks a serious effort to expand India's engagement with the Pacific in the Pacific region. A major part of India's engagement with these countries is through development assistance, through South-South cooperation. So, what are the different initiatives under this summit? South-South cooperation. South-South cooperation, then mainly in capacity building. Now, this cooperation is being in capacity building, skill development, and skill development, right? And grant and aid, and loan assistance, and then we have community development projects. Okay. In 2015, FIPIC Trade Office at Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry to promote trade and investment opportunities. So this is the third. ये जो अभी summit हो रही है ना FIPIC की, this is the third FIPIC summit. तो अगर न्यूज में अगर लेट्स से एग्जाम में आता है ना, अगर एग्जाम में ये पूछेंगे कि वेयर वाज द थर्ड फिपिक समिट कंडक्टेड, देन इट वाज इन Port Moresby. Okay, this is the place where this was conducted. And if they ask you where the first and second was conducted, then you'll have to research FIPIC summit. So you can Google it, FIPIC summit, or you can also write it in the comment section कि फर्स्ट और सेकंड फिपिक समिट कहाँ पे हुआ था, right? Okay, so let me know in the comment section below. Okay, the next news item now. The next is wrestlers accept Wrestling Federation of India's chief demands for narco test under Supreme Court supervision. The grapplers protesting against the Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan Sharan Singh on Monday said they were ready to undergo narco test under the supervision of the Supreme Court. Right, so Mr. Singh, who is facing sexual harassment allegations, had said on Sunday that he was willing to undergo a polygraph test if the same test was conducted on wrestlers and telecast test. We are ready for narco test long. We were ready for the test long ago. The test should be conducted under Supreme Court supervision. Okay, so let's see what is the narco test. Okay, so what is polygraph test? Polygraph. Okay, we have, see, जब भी क्या होता है पॉलीग्राफ, लाई डिटेक्टर टेस्ट, then you also have narco analysis, you also have brain mapping. ये सब क्या है? ये सब डिफरेंट तरीके के टेस्ट्स हैं जिससे कि पता चलता है कि whether the person is saying something truth or not. They can be used to understand and evaluate
or basically get information from the person. Okay, now so इसके basically ये जो tests है ना, these tests, they are basically you say they are not. First let's understand the constitutional framework. देखो क्या होता है कि in our constitution we have article 20 clause 3. ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बात करता है, विच इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट. ठीक है, इट स्टेट्स दैट राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एंड ये राइट right किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट स्टेट, दैट इज एग्जीक्यूटिव. इफ यू ऑल रिमेम्बर, जब हमने आर्टिकल 20 को डिटेल में डिस्कस किया था तो हमने आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात करी थी, राइट. आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है वो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉज की बात करता है, राइट. 20 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट एक्सपोज्ड फैक्टो लॉज, और वो किसके अगेंस्ट होता है, लेजिस्लेचर के अगेंस्ट होता है, बिकॉज लॉ कौन बनाता है, लॉ लेजिस्लेचर बनाता है, राइट. फिर 20 क्लॉज 2 क्या होता है, डबल जियोपार्डी. डबल जियोपार्डी, राइट. ये लॉ कौन बनाता है, सॉरी, डबल जियोपार्डी इज बेसिकली अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड अगेन फॉर द सेम क्राइम. तो कन्विक्ट कौन करता है, जुडिशरी कन्विक्ट करती है, राइट. पनिशमेंट कौन देता है, जुडिशरी पनिशमेंट देती है. तो ये जो लॉ है, ये राइट है, दिस राइट इज अगेंस्ट द जुडिशरी, दिस राइट इज अगेंस्ट द लेजिस्लेचर, दिस राइट इज अगेंस्ट द जुडिशरी. एंड जो थर्ड राइट है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में जो लिखा हुआ है, दैट इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दैट इज अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव. क्योंकि जब भी कोई भी अक्यूज होता है, ठीक है, उससे बयान कौन लेता है, उससे जो उसका स्टेटमेंट्स है, राइट, वो कौन लेता है, वो व्हाट हु कंडक्ट्स द इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन किसके हाथ में होता है, investigation is conducted by police, right, or for that matter the executive. ठीक है, because police is part of the executive. ठीक है, that's why investigation में ये बोला जाता है कि पुलिस के सामने अगर कुछ भी, let's say if a person even confesses against in front of the police, so that confession is not valid. एक है, दिस इज सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो इंडियन एविडेंस एक्ट, इवन दो इट्स नॉट रेलेवेंट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 25 है वो बोलता है कि पुलिस के सामने जो भी कन्फेशन, अगर कोई पर्सन अपने क्राइम का कन्फेशन भी कर रहा है, इट विल नॉट बी वैलिड इन कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट, इट इज इनवैलिड इन कोर्ट ऑफ लॉ. तो कोर्ट ऑफ लॉ में वो नहीं कर सकते. बट अगर कोई कन्फेशन करता है, कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जो डीएम है, राइट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई पर्सन कन्फेशन करता है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, तो ये है, दिस इज द लॉ, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एज वेल एज द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क जो मैंने बता दिया. अब हम उस पे आते हैं कि ये जो टेस्ट हैं, ये सारे जो टेस्ट हैं, राइट, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ टेस्ट हैं जिनको कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है विद वेरियस, काफी सारे जजमेंट्स हुए हैं, राइट. सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, एंड वी हैव हैड a number of judgments. You don't need to go into judgment, but what you need to understand is the concepts. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, according to Supreme Court, these tests are basically not allowed, they are not permissible. कौन सी चीजें permissible हैं, like जैसे handwriting tests लेना, handwriting documents या samples लेना, वो permissible है. ठीक है, डीएनए सैंपल लेना भी परमिसिबल है. किसी पर्सन का आपको डीएनए चेक करना है तो डीएनए सैम्पलिंग इज ऑल्सो परमिसिबल. ठीक है, ये जो परमिसिबल है, परमिसिबल का मतलब ये है कि आप बिना पूछे भी, अगर वो अक्यूज्ड जो है पर्सन,
वो अगर मना भी करता है तो उसे उसके मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसका हैंड राइटिंग सैंपल, डीएनए सैंपल, इवन वॉइस वॉइस सैंपल, ठीक है, ये सारी चीजें अगर जरूरी हैं, फिंगरप्रिंट्स फिंगरप्रिंट्स, ये अगर ये कुछ ऐसी चीजें अगर ये जरूरी हैं किसी चीज को प्रूफ करने के लिए, किसी एक फैक्ट को प्रूफ करने के लिए, तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी को अगर प्रूफ करने के लिए ये पर्टिकुलर एविडेंस जरूरी है, तो ये बिना पूछे अक्यूज से लिए जा सकते हैं। इसमें अक्यूज्ड की सहमति की जरूरत नहीं है। दीज कैन बी टेकन बाय द पुलिस, और पुलिस फिर इनको प्रेजेंट कर सकती है इन रिकॉर्ड्स को एज एन एविडेंस। तो इन पर्टिकुलर उनकी एविडेंशियरी वैल्यू है कोर्ट में, कि पुलिस डायरेक्टली उनको एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कर सकती है। बट व्हेन इट कम्स टू पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या होता है? एक लाई डिटेक्टर मशीन होती है, ठीक है, पॉलीग्राफ मशीन जिसको बोलते हैं। सो तो उसमें बिकॉज इट कनेक्ट्स विद योर हार्ट, एंड इट कनेक्ट्स, वो बीपी को और हार्ट रिदम्स को एनालाइज करके बताती है कि whether the person is lying or whether the person is saying correct, like what whether the person is right or wrong। तो वो सारी चीजें वो मशीन के उसमें पता चलता है, ठीक है, whether the person is lying or not। एंड नार्को एनालिसिस होता है, नार्को एनालिसिस जिसमें कि एक केमिकल होता है जिसको कि ट्रूथ सीरम केमिकल के नाम से जानते हैं, ट्रूथ सीरम। आई डोंट नो द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रूथ सीरम, आई जस्ट नो कि वो एक पर्टिकुलर केमिकल, इट इज अ केमिकल sort of you can say a dose which is given to the person, ठीक है, जिसका भी नार्को एनालिसिस होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है, वो पर्टिकुलर उसके ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है, और फिर वो पार्टली अनकॉन्शियस होता है, वो पर्सन पार्टली अनकॉन्शियस होता है, पार्टली कॉन्शियस होता है। एंड उस स्टेट में उसको जो है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस स्टेट में क्या होता है ना कि उस स्टेट, वो जो पर्टिकुलर स्टेट होती है उसमें इंसान झूठ नहीं बोल पाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रूथ सीरम। तो वो लिक्विड पर्टिकुलर इंजेक्ट किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, एंड वो फिर ऐसे स्टेट में आ जाता है इंसान कि फिर वो झूठ नहीं बोल पाता है, और जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी उसको पता होता है, वॉट एवर दैट पर्सन बिलीव्स टू बी ट्रू, वो सारी इंफॉर्मेशन वो दे देता है। दैट इज नार्को एनालिसिस, ठीक है। और द थर्ड इज ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग में ब्रेन के सिग्नल्स और ब्रेन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करके फिर उससे पता लगाया जाता है कि whether the person is lying or not, ठीक है। तो ये सारे जो टेस्ट है ना, ये परमिसिबल नहीं है एज एन एविडेंस, दे डोंट हैव एविडेंशियरी वैल्यू, बिकॉज क्या होता है कि इसमें वायलेशन होता है राइट का, पर्सन के राइट का वायलेशन होता है। राइट कौन सा? जो फंडामेंटल राइट में जो पर्सन का जो आर्टिकल 23 के अंडर राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, उसका वायलेशन होता है, इसलिए ये परमिसिबल नहीं है, ठीक है। बट एनएचआरसी ने कहा है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला कि अगर लेट से कुछ ऐसे भी सिचुएशंस आती हैं वेर इन द अक्यूज्ड, जो पर्सन अक्यूज्ड है वो खुद ही बोलता है कि अच्छा ठीक है, आई एम वॉलंटरी इन केसेस ऑफ वॉलंटरी टेस्ट, जैसे कि अगर कोई वॉलंटरीली अगर ये टेस्ट, इन तीनों में से कोई भी टेस्ट दे रहा है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा ना, उसको भी एज अ स्टेटमेंट यूज किया जाएगा, उसको भी एज अ डायरेक्ट एविडेंस नहीं यूज कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। सो पुलिस उसको प्रेजेंट कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट में, या मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में पुलिस उसको प्रेजेंट कर पाएगी उस डायरेक्ट उसको एविडेंस को, बट नॉट डायरेक्टली। तो पुलिस को फिर प्रूव करने के लिए सब्सटैंशियल बैकअप भी लाना पड़ेगा, लाइक तो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल पुलिस ने अगर कोई क्रिमिनल है, उसने बोल दिया कि ठीक है आप मेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट कर लीजिए, पुलिस ने नार्को एनालिसिस टेस्ट किया, बट फिर वो जो डेटा निकला उस टेस्ट में से, जो रिजल्ट निकला उस टेस्ट का, फिर वो कोर्ट के पास लेके गया, पुलिस जब कोर्ट के पास लेके गई उस पर्टिकुलर टेस्ट के रिजल्ट्स को, तो पुलिस उसको डायरेक्टली एज एन एविडेंस नहीं पेश कर सकती। पुलिस को बोलना पड़ेगा कि अच्छा हाँ ये टेस्ट के रिजल्ट है, बट ये और भी एविडेंसेस हैं, they will not be taken as direct evidences, they will be taken will be considered as indirect evidence।
सो इनडायरेक्ट एविडेंशियरी वैल्यू होगी उनकी, ठीक है. सो दैट इज व्हाट एनएचआरसी हैज सेट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ये तीनों बेसिकली बैंड है. इस केस में भी अगर रेसलर्स और जो द पर्सन, द चीफ, WFI चीफ, अगर ये सब भी नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए दे ऑल आर अग्रीइंग, राइट. तो इनका भी जो जो रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, जो भी टेस्ट का जो डेटा निकलेगा, उसको भी पुलिस या जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं वो डायरेक्टली कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगी. उनको भी सब्सटैंशियल एविडेंसेस के साथ बैकअप करना पड़ेगा, सपोर्टिंग एविडेंस देने ही पड़ेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर डेटा को बैकअप करने के लिए. आई होप दैट्स क्लियर. ओके, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट न्यूज आइटम है, दिस इज दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन. सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हैज प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ एसिड in cleaning public toilets maintained by the civic body after revising the terms of contract with the private agencies responsible for the upkeep. The contract earlier had a clause to penalize agencies for not using acid to clean toilets. The move comes more than a month after the Delhi Commission for Women issued a summons to civic body following the visit of DCW Chief Swati Maliwal to toilet for women, ठीक है, and where she found a 50-liter canister containing acid kept in open. अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है आईपीसी के पर्सपेक्टिव से, आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से. और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे एसिड अटैक. ओके, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट. नाउ it's important to know the provisions related to acid attack and the punishment that has been enshrined in the IPC, that has been given in the IPC. तो you see acid attack के cases बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, right? And काफ़ी states में, not just Delhi but states like West Bengal, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सब कुछ कुछ ऐसे states हैं जहाँ पे acid attack के cases बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं according to the NCRB data. NCRB is National Crime Records Bureau data, right? एंड मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने, MHA ने एडवाइजरी भी इशू करी थी टू ऑल स्टेट्स टू इंश्योर स्पीडी जस्टिस इन केसेस ऑफ एसिड अटैक्स बाय एक्सपीडिएटिंग और एक्सपेडाइटिंग प्रोसिक्यूशन, ठीक है. बट व्हाट आर द लॉज? सो अंटिल 2013 वी डिड नॉट हैव एनी लॉ ऑन एसिड अटैक, ठीक है, एंड एसिड अटैक्स वर ट्रीटेड एज सेपरेट क्राइम्स बिकॉज देयर वाज नो लॉ. 2013 तक नहीं था, बट हाउएवर 2013 में जब अमेंडमेंट हुए, 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था. ये आया था आफ्टर द रिकमेंडेशंस बाय जस्टिस वर्मा कमिटी, जस्टिस वर्मा कमिटी रिपोर्ट, ठीक है, ये पब्लिश हुई थी. उनके जो रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशंस थे उसमें उन रिकमेंडेशंस को फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने उसके बाद, एंड उसमें काफी सारे प्रोविजंस इंसर्ट हुए थे, right, like gang rape, provisions related to gang rape, provisions related to stalking, provisions related to various different provisions, ठीक है. तो 2013 के you can read the 2013. I will be sharing that in new जो notes है ना टेलीग्राम पे, मैं जो notes share करने वाली हूँ उसमें मैंने 2013 criminal law amendment act and 2018 criminal law amendment act की कुछ कुछ कौन से provisions हैं जो कि insert किए गए हैं IPC में. तो मैं I have already put that in this thing, and once it is ready I'll be sharing it on the telegram channel, okay. So let's see what is the provision. So we have section 326 capital A of IPC. It deals with acid attack, okay, punishment for acid attack. Punishment is for 10 years and which is extendable to 10 years to life imprisonment.
right? Because in some cases, in some cases what happens is कि acid attack say the person, there have been in fact many instances where the person succumb to death also, because you never know ना कि acid सिर्फ चेहरे पे आ रहा है कि acid अंदर तक पूरा seep in कर रहा है, and then of course the person, if that particular acid seeps in into the nerves and nerve endings, and then of course the person can succumb to death. So it is a heinous form of grievous hurt. And right, so 326 इसीलिए because 326 यहाँ पे you can remember it, because 320 319 में hurt है, right, and 320 of IPC deals with grievous hurt. ये सब जो है, these are offenses related to human body, offenses against human body. Okay, right. So you need to understand that this is the law, और ये 2013 amendment के बाद से add हुआ है. Okay, and all right, so this is what you need to know from your exam point of view. Okay, we'll move on. Acha, now this is solidarity for peace. The G7 must build a global consensus on the world's challenges. Let's see what this news item talks about. Now, this article is discussing G7 summit that took place in Hiroshima, Japan. तो ये G7 summit जो अभी हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? Is taking place in Hiroshima, Japan. If you all remember, we talked about in one of our previous sessions, we had talked about the non-proliferation treaty. ठीक है? This is, you can say, a nuclear disarmament treaty. Nuclear disarmament. Okay. एंड हिरोशिमा जापान क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज यूएस ने 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी पे अटैक किया था, न्यूक्लियर हिरोशिमा एंड नागासाकी पे. ये दो शहर हैं, टोक्यो पे नहीं किया था, टोक्यो इनफैक्ट इज द कैपिटल ऑफ जापान. हिरोशिमा एंड नागासाकी हैं जो जापान के, उन पे अटैक किया था, एटम बॉम्ब अटैक. ठीक है, and right, okay, and उसी के बाद फिर पर्ल हार्बर हुआ था यूएस में, जब when Japan attacked US. Okay, so that's the historical aspect, but yes, you need to know what's the perspective. Okay, what is the historical background? So just you need to remember. Okay, solidarity for peace. Now it highlights that the Japanese Prime Minister, who's the Japanese Prime Minister, is Fumio Kishida. Okay, who is from Hiroshima, intended to convey a message of global solidarity for peace by hosting the summit in the city. Now, what is G7? We have already discussed, but I'll revise it briefly. G7 is an intergovernmental organization that was formed in 1975. तो ये जो G7 है, ये 1975 में form हुआ था, right? And the bloc meets annually to discuss issues of common interests like global economic governance, international security, energy policy, climate change, so on and so forth. Okay, the G7 countries include UK, Canada, France, Germany, Italy, Japan, and US. G7 does not have a formal charter or a secretariat. The presidency, which rotates among member countries each year, is in charge of setting the agenda, right? And as of 2022, G7 countries make up 10% of the world's population and 31% of global GDP. Okay, and 21% of global carbon dioxide emission. China and India are the two most populous countries with among the largest GDP figures in the world. Right, in all,
and all the G7 countries and India are part of the G20. Okay, so now this they have recently released the G7, consisting of the world's most industrialized nations, along with the European Union leadership, issued a special statement on nuclear disarmament called the. They have issued the statement, this Hiroshima Vision Statement on nuclear disarmament. The presence of US President Joe Biden, only the second sitting American president, right? So, okay, what you need to understand from your exam point of view is that Hiroshima, first of all, you need to understand G7 जो grouping है उसके बारे में. Then Hiroshima, Nagasaki, the importance. So why have they chosen? What are the reasons for choosing Hiroshima? So it is symbolic in nature. ठीक है, Hiroshima holds immense symbolism as the first city in the world to experience the devastating effects of nuclear weapon. And this was prime minister's commitment, because Prime Minister Fumio Kishida is also, he belongs to Hiroshima, and the focus is on nuclear testing and accidents. तो उसमें ये बात हो रही है कि जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर पावर को यूज करें फॉर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज rather than destructive activities. कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर इज द बेस्ट सोर्स व्हेन इट कम्स टू एनर्जी प्रोडक्शन. ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन पूरा फ्रांस करेंटली हैज न्यूक्लियर पावर. ठीक है, फ्रांस इज अ न्यूक्लियर पावर कंट्री, एंड फ्रांस न्यूक्लियर पावर को यूज करता है पूरे कंट्री को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए. एंड न्यूक्लियर पावर इज अ वेरी स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियर पावर बहुत अच्छा तरीका है. सो इट कैन बी यूज्ड, दिस पावर कैन बी यूज्ड फॉर constructive and good things also, and not necessarily for destructive things. But sadly, the sad thing is that nuclear, currently countries like China, Pakistan, now North Korea, such countries are actually having nuclear weapons. So they might use for destructive activities. This is the fear. Okay, let's see. Okay, so this is what you basically need to know for from your exam point of view. And G7 holds significance for India on several fronts: economic importance, strategic partnerships, climate change and sustainable development, technology and innovation, global diplomacy and influence, multilateral cooperation. ठीक है, ये सारे कुछ points हैं. इंडिया के कौन कौन से issues हैं उसमें, तो these are the issues that were discussed. अच्छा, India is not part of the nuclear proliferation treaty. Just please keep that in mind. India is not part of the NPT. Okay. अच्छा, so we'll move on. Now, this is an article related to climate change. Antarctic sea ice cover hits many record lows. Barring March and April, all the other days of 2023, the sea ice extent has remained the lowest ever recorded. Okay, so this is a report which has they have actually published data related to ice melt. Okay, so we need to see what is the major conference international framework related to climate change. So we have the United Nations Framework Convention on Climate Change. UNFCCC. ठीक है, this is very important. So UNFCCC is the primary multilateral treaty. This is the first multilateral treaty when it comes to climate change. And ये कब साइन हुई थी? This was signed in 1992.
Where was it signed? It was signed in Rio, Brazil. और इसको इसको क्या भी बोला जाता है? इसको बोला जाता है अर्थ समिट 1. Just remember it as Earth Summit. Okay. So UNFCCC is primary multilateral treaty governing actions to combat climate change through adaptation and mitigation efforts. I'm sorry, directed at control of emission of greenhouse gases. So GHGs, greenhouse gases, and that cause global warming. Even though climate change is a global concern, some of the countries are majorly responsible for greenhouse gas emissions into the atmosphere. Many island nations are facing the major brunt of climate change in the form of sea level rise, cyclones, erratic weather conditions, and UNFCCC is a major step in the direction to control the downward spiral of climate change. And उसके साथ साथ UNFCCC के साथ दो other sister conventions were signed. One was CBD. This is Convention on Biological Diversity. Convention on Biological Diversity, CBD. ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे प्रिजर्व करें, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, उसकी बात करता है, राइट. यूएन कन्वेंशन ऑन, दिस इज यूएन सीबीडी. ओके. And this was signed in 1992. It came into force in 2002. ठीक है. And इंडिया में भी हमारे पास we have the Biological Diversity Act. Okay. So in India we have the Biological Diversity Act, which was also enacted in 2002. Acha. Then we also have another sister convention is UN Convention to combat desertification. Because all of these things are desertification. Okay. This is UNCCD. Alright. So these are all related issues because climate change hoga, the climate change is going to affect the biological diversity of the planet, and it is also, and desertification is also responsible for bringing for release of greenhouse gases into the atmosphere. So desertification को रोकना बहुत important है. In fact, desertification is the cause, one of the important causes for climate change. That's why it is very important to curb desertification, right? The first global conference on climate change was held in 1972 in Stockholm, Sweden, and this conference ushered in numerous global negotiations. Right, UNFCCC was signed in 1992, right, in Rio, Brazil, and what is known as the Magna Carta. So you can say this was the first multilateral treaty, but what is the first international convention? First international convention related to climate change action, right? This was Stockholm Convention in 1972. This is also, they actually came up with United Nations Convention on human environment. Okay, human environment, development of human environment, and this was signed in 1972. The Stockholm Convention is actually known as the Magna Carta of Environment Law. Magna Carta of International Environmental Law. Right? Now, what you need to remember is UNFCCC may, I'll just write it here. See, UNFCCC may, they have conference of parties. Okay, and conference of parties meet every year. Okay, so conference of parties 2026 they met in 2022. ये 2022 में meet हुई थी in Glasgow, Sweden.
right? Now your task is to note where 2027 was conducted and where 2028 20 sorry COP27, COP28, COP29, ye sari, and the year and the place. You need to know all these because these important information can be asked. Okay. And of course UNFCCC is also known as the Paris Convention. So the sorry so COP 2021 is considered most important. So sorry, see, COP 21 is known as the Paris. It was held in Paris, and Paris Agreement was signed, which is also one of the most important agreements when it comes to climate change, which aims to reduce and mitigate global greenhouse gas emissions. Okay, and India, what all steps has India taken? India has basically India. We in India we have the National Action Plan for Climate Change. So National Action Plan for Climate Change (NAPCC). Okay, and we have actually adopted this plan seeing the after the Paris Agreement. Okay, in COP 21, and India has been instrumental in the formation of coalition for disaster resilient infrastructure. Okay, and we have जो NAPCC है, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर 8 प्लान्स हैं. उसके अंदर कौन कौन से प्लान्स हैं? वी हैव नेशनल सोलर मिशन, वी हैव नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, national mission on sustainable habitat, national water mission, national mission for sustaining the Himalayan ecosystem, national mission for a green India, national mission for sustainable agriculture, national mission on strategic knowledge for climate change. Okay, all right. And also you need to know कि ये जो UNFCCC है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? It's located in Bonn, Germany. UNFCCC, the headquarter is located in Bonn, Germany, the secretariat. Okay. All right. So this is important from your environmental law perspective. Okay. Then we will move on to another news item. Okay, so this particular news item relates to the Delhi tussle over services. Okay, so it reads, what is the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023? Or how is it going to affect the powers of the elected state government of Delhi? And does it restore the powers of Lieutenant Governor? What was the May 11 judgment by the Supreme Court? So is this article, I have already discussed the Delhi CM versus LG dispute. We have already discussed these things, matlab this concept in quite detail. Delhi CM versus LG dispute. Okay. So this I would ask you all to please go through this article. ये article self-explanatory है. Once you will read the article, you will understand, and you can also refer to the previous sessions that I have undertaken, and उन previous sessions में मैंने बहुत detail में explain किया है ordinance का, explain किया है act को, जो 2021 amendment था, जो case laws हुए हैं अभी तक, उनको भी बहुत detail में explain किया है. So I think you can go and refer to this particular article because this article is very lengthy and will take up a lot of our time. So you can read, I'll just read the gist. So constitutional bench of, so I'll just briefly मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ. 11th May को, see ये जो टसल है ये बहुत टाइम से चल रहा था. Now 11th May को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जो जो ये डिस्प्यूट है, दिस वाज ओवर सर्विसेज. सर्विसेज एज एन जो भी दिल्ली गवर्नमेंट में अपॉइंट होते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है,
तो उनके अपॉइंटमेंट, उनके ट्रांसफर और उनके डिसमिसल से रिलेटेड जो पावर है वो किसके हाथ में है? वो दिल्ली चीफ मिनिस्टर के हाथ में होगी या लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होगी, राइट? तो ये पूरा डिस्प्यूट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को ये बोला कि कि जो है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट जो चुन के आई है, जो जनता ने जिनको इलेक्ट किया है, दे शुड हैव पावर ओवर द सर्विसेज, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बट अभी एंड उसके बाद जो आप गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे ट्रांसफर किए, बहुत सारे लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड under the services. Many people were appointed, many new people were appointed, many were dismissed, so like that, and many were actually transferred. तो ये सारी चीजें हुई, and then of course अभी president has issued 2 days back, president has issued an ordinance, has promulgated an ordinance promulgation हमने बात की थी, article 123 of the constitution of India gives power to the president, the president's legislative power to promulgate an ordinance. Okay, अब ये जो ordinance है, this is the government of national capital territory of Delhi amendment ordinance 2023। तो अब ये जो ऑर्डिनेंस अब आया है, ठीक है, ये अब ऑर्डिनेंस क्या हो रहा है, वो वापस से रीइंस्टेट कर रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसने क्या किया था कि जो पावर थी, पावर दे दी थी दिल्ली सीएम के हाथ में। अब इस ऑर्डिनेंस के बाद पावर जो चली गई है, पावर हैज बेसिकली गॉन इन द हैंड्स ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और द बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द सेंट्रल अथॉरिटी, इट इज द सेंट्रल, ठीक है। अच्छा, तो उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आई जस्ट राइट सीजी ने क्या किया है, रिव्यू पेटिशन फाइल कर दी है। रिव्यू पेटिशन हैज बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 137 of the constitution has the power to review its own judgment, delivered own judgment or order, ठीक है। सो रिव्यू कब करता है, when there is a patent error, ठीक है। अब पेटेंट एरर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि देयर इज अ पेटेंट एरर इन द जजमेंट। व्हाट इज द पेटेंट एरर? नाउ you need to understand the background. Delhi is the national capital of India, ठीक है। इंडिया का कैपिटल है, जो नेशनल कैपिटल है पूरे कंट्री का, तो क्या उसको स्टेट का पूरा दर्जा दिया जा सकता है? नहीं। इट इज नाइदर अ स्टेट नॉर अ यूनियन टेरिटरी। तो दिल्ली स्टेट भी नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी नहीं है। दिल्ली हैज अ स्पेशल स्टेटस ऑफ एनसीटी, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, अंडर आर्टिकल 239 ए के अंडर, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेसिकली स्टेटिंग दैट दिल्ली, बिकॉज एक नेशनल कैपिटल है, तो दिल्ली बिलोंग्स टू यूनियन, एंड नॉट टू स्टेट। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको दिल्ली बिलोंग करता है, एंड नॉट टू स्टेट और द दिल्ली गवर्नमेंट। सो इसमें यूनियन का ज्यादा पावर होना चाहिए। दिस इज व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्ली इज, एंड बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर के हाथ में पावर दे दी थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग दैट देयर वाज अ पेटेंट एरर इन द जजमेंट, दैट इज व्हाई द सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू रिव्यू इट्स जजमेंट ऑफ May 11, ठीक है। So Constitution Bench on May 11 held that Delhi government can make laws and administer civil services in the national capital. However, on May 19th, the centre turned the tables on the judgment. The president promulgated the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 to make a fresh claim of power over the services in the capital.
The ordinance forms a permanent national capital. तो ऑर्डिनेंस ने ये भी किया है, they have actually formed a permanent national capital civil services authority, NCCSA. ठीक है, इसका गठन हुआ है. ठीक है, so this has been established and the ordinance forms a permanent, now this is a permanent body, please remember that. With the Chief Minister as chairperson and Chief Secretary and Principal Home Secretary as member and member secretary, respectively. The NCCSA exercises authority over civil service officers working in all Delhi government departments except those in public order, police and land. Right? So public order, police and land we have already discussed कि ये तीन जो issues हैं state list में, उसके ऊपर central government laws बनाता है. एंड बाकी सारे जो इश्यूज हैं दिल्ली के, जो बाकी सारे स्टेट लिस्ट में इश्यूज हैं उनके ऊपर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाता है. राइट? एंड the lieutenant governor's decision in case of a difference of opinion would be final under this particular ordinance. The ordinance is based on the argument that the Supreme Court has itself acknowledged the superior authority of Parliament to make laws for the national capital. So ये जो 11th मई का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो GNCTD एक्ट था, अमेंडमेंट एक्ट था 2021 का, ये अमेंडमेंट एक्ट था, उसको इनवैलिडेट नहीं किया, उसको वैलिडेट कर दिया कि नहीं, दिस एक्ट इज वैलिड, बट व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज तो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है दे शुड बी हैविंग द पावर. तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक्ट वैलिड है, बट बिकॉज जनता से इलेक्ट होके जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं विच हैव फॉर्म्ड द दिल्ली गवर्नमेंट, सो दे शुड हैव मोर पावर. बट प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया. राइट? एंड ऑर्डिनेंस में NCCSA एस्टैब्लिश कर दिया परमानेंट बॉडी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिव्यू पेटिशन भी डाल दी सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, सो दिस इज द होल gist and you can go ahead and please read the article, give it a read, it's a very interesting article. Acha, now we'll move on to another news item, and yes, I will be sharing the notes related to these in on my Telegram channel as well. I can understand my handwriting is not bearable so I will be sharing just so that everything is clear to all of you so that you can refer to it. Okay, then next is will bring a bill to link death and birth data with voter rolls. Sure. Now the next news item is also related to it. Update NPR to enumerate self during next census. So let's read what is being stated. Union Home Minister says registration of births and deaths is important for updating citizens register and list of people who avail schemes. ठीक है, तो जनरली बिकॉज सी ये जो इशू है ना, ये इसलिए आ गया, इशू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है बिकॉज बहुत सारी इलीगल माइग्रेशन हो रहे हैं. इलीगल माइग्रेशन दे हैव इंक्रीज, वी हैव द डेटा कि इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली फ्रॉम कंट्रीज लाइक बांग्लादेश. ठीक है, एंड पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान and states like Myanmar, right? तो these are few of the states जहाँ से illegal migration बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, and because of increased illegal migration, तो क्या होता है कि लोग आ जाते हैं, ठीक है, बट उनके पास और वो लोग बुरे कंडीशन में रहते हैं. ठीक है, and they don't have anything to prove, right, ki whether they are citizens of the country or not. They don't have any data, they don't have their birth certificate. और अच्छा, ये illegal migration ही नहीं, बहुत सारे cases ऐसे भी होते हैं because immoral trafficking के भी बहुत सारे cases होते हैं. Basically people who are not citizens and who do not really have documents, they are not eligible for availing schemes and benefits. तो क्या होगा कि जो already आ गए हैं because of any reason, तो उनको फिर या तो उनको citizens बनाया जाएगा, they will have to undergo the naturalization process, जो भी citizenship का process होता है वो, or they will have to either be sent back to their homeland, to their country from where they have come. ठीक है, तो ये एक है. तो
जब ये let's see what the news item is stating. Just a second. Hmm. So, a bill to link birth and death register with electoral rolls will be introduced in the next parliament session, Union Home Minister Amit Shah said, and the minister said that registration of births and deaths is important for updating citizens' register, electoral rolls, and list of people who avail themselves for welfare schemes. So welfare schemes जो government launch करती है, उसकी जो benefit है उन welfare schemes का ऐसे ही लोगों को मिले जो कि genuine लोग हैं, ठीक है, जो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं हैं, जो कि प्रॉपर ओरिजिनल लोग हैं इंडिया के, उन्हीं को मिलना चाहिए उसका बेनिफिट। जो ऑलरेडी दे आर सिटीजन्स इंडिया के, उन्हीं को बेनिफिट मिलना चाहिए, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको बेनिफिट नहीं जाना चाहिए। दिस इज व्हाट द होम मिनिस्टर हैज स्टेटेड. He was speaking at the inauguration of the new census building here. The decennial census that was to be completed in 2021 was indefinitely delayed due to 2020 due to COVID-19 pandemic. Yes, we will be talking about the 2021 census as well. The government had not given any reason to further postpone the exercise, which was last done on 2011, right? And uh, the government led by Prime Minister Modi is going to make such arrangements that as soon as person turns 18, the Election Commission will intimate him and make his voter card. In case of someone's death, the census registrar will send a notice to the family that they have received information about the person's death, and the family has 15 days to object, following which the EC will remove his name from the voters list. The Union Minister also launched an upgraded sample registration system, SRS, mobile application system. The SRS is a large scale demographic survey conducted every year by the Registrar General of India RGI office to estimate the birth and death rate and other fertility and mortality indicators. Okay, here if citizens want to exercise the right to fill the census form on their own rather than through government enumerators, they will have to first update their national population register details online. NPR, first put together in 2010 and updated in 2015, already has the details of 119 crore people. Census 2021, which has been postponed indefinitely, will be first digital census. So census 2021, now this is very important from your exam point of view. See, census 2021 will be the first digital census giving citizens an opportunity to self enumerate as and when it is conducted. The government has not announced when the next census will be held, with January 2 notification ruling out the exercise at least till September, right? Okay, ठीक है, so let's understand what this is about. What is NPR? पहले तो NPR समझते हैं. So National Population Register. NPR. NPR is a database containing a list of all usual residents of the country. So it is a database for citizens. अच्छा, there is a difference between, बहुत लोग confuse हो जाते हैं कि citizens है residents है. So citizens और residents में अंतर होता है, ठीक है? So there is a difference between citizenship and residentship. So a person who may or may not be resident in India, who may be residing somewhere else, somewhere in other country, but he may be having, he will be having citizenship of India if he has not renounced the citizenship. So citizenship is something it is given to Indian nationals. If you are having the if you are having the nationality of India, and so citizenship is like person who has citizenship can avail the benefits and schemes, who can be governed under the laws of India, who can be governed under the constitution of India and the other laws. ठीक है, तो ये सारे जो benefits होते हैं वो citizens को मिलते हैं, ठीक है.
अब इंडियन ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन इंडियन नेशनैलिटी का हो बट वो दूसरी जगह पैदा हुआ और उसका उसने सिटीजनशिप कहीं और की ले रखी हो, तो दैट्स अनदर थिंग, बट सिटीजनशिप इज डिफरेंट फ्रॉम रेजिडेंटशिप. ठीक है, ओके. So I hope this is clear. Now, a usual resident for the purposes of NPR is a person who has resided in a place for 6 months or more and intends to reside there for another 6 months or more. Its objective is to have a comprehensive identity database of people residing in the country. It is generated through house to house enumeration during house listing phase of the census. The NPR was first collected. So NPR was first collected in 2010, and then it was later on it was collected in 2015. ठीक है, 2010 और 2015 में. एनपीआर की जो लीगल बैकिंग है, एनपीआर का जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है वो क्या है? सो वी हैव द सिटीजनशिप एक्ट 1995 में सिटीजनशिप एक्ट बना था. ठीक है, एंड इंडिया इज ओनली कंट्री, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में, अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में, उसमें पार्ट 2 में सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं. ठीक है, वो क्यों है? बिकॉज जनरली क्या होता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते किसी कंट्री के, वो हमेशा एक अलग से लॉ होता है जो उस कंट्री की पार्लियामेंट बनाती है. बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस क्यों है? वी हैव एन एंटायर पार्ट 2 related to citizenship, that is from articles 5 to article 11. ठीक है, तो आर्टिकल 5 से 11 तक की जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस डाले गए थे उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने डाले थे ओरिजिनली, बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन. तो पार्टीशन क्योंकि हुआ था उस टाइम पे इंडिया का दो जगह से, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, उस टाइम पे बांग्लादेश तो था नहीं, तो इसलिए पार्टीशन क्योंकि हुआ था, इसलिए पार्टीशन को क्लैरिफाई करने के लिए एंड हु विल बी और हु विल नॉट बी रिगार्डेड एज एन इंडियन सिटीजन, वो सारी चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए सिटीजनशिप के प्रोविजंस आर्टिकल 5 to 11 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाले गए थे. ठीक है, बट आज के टाइम में ये उस टाइम का था, बट आज के टाइम में आर्टिकल 5 to 10 जो है वो रिडंडेंट हो चुके हैं. वो रिडंडेंट क्यों हो चुके हैं? बिकॉज ये उस टाइम के लिए थे और उस टाइम की जो जनरेशन थी उनके लिए थे. ठीक है, तो आज के टाइम में वो रिडंडेंट हो गए हैं, बट आर्टिकल आई मीन दे आर स्टिल देयर, बट आर्टिकल 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स पावर टू पार्लियामेंट to make laws on citizenship. ठीक है, किसी पर्सन को सिटीजनशिप लेनी है या रिनाउंस करनी है, एक्विजिशन एंड एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप. ठीक है, तो ये सारे चीजों से रिलेटेड जो भी लॉ है वो पार्लियामेंट बनाता है, और पार्लियामेंट के पास पावर कहाँ आती है? अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसीलिए अंडर आर्टिकल 11 पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था, जिसको कि बहुत बार अमेंडमेंट बहुत बार हुआ है, एंड द लेटेस्ट अमेंडमेंट वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. ठीक है, CAA 2019 जो हम लोग फेमसली जानते हैं. सो राइट, सो सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन, सो बहुत सारे इनफैक्ट दे हैव बीन डिफरेंट रूल्स एंड डिफरेंट एंड NPR जो है, this comes under the citizenship registration of citizens and issue of national identity cards रूल्स 2003. 2003 में ये रूल्स बनाए गए थे, सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स. ठीक है, और इसके अंडर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन आता है. सो दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर अंडर NPR.
and it will streamline the data related to residents across various platforms. For instance, it is common to find a different date of birth for a person on different government documents. तो ये कई जगह होता है ना कि अलग डॉक्यूमेंट पे अलग डिटेल्स हैं, मिसमैच है, एड्रेस कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, बिकॉज सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, सारी चीजें इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी, so that will be easy. And so NPR will eliminate any kind of disparity or any kind of ambiguity when it comes to discrepancies in the documents details. Okay, it will help the government formulate its policies better. Government को पता चलेगा कि अच्छा हाँ ठीक है, ये citizens का पूरा data है, तो उनमें से कितना जो demographic है उसमें कितने सिटीजन्स कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो हमें जो स्कीम बनानी है, हमें जो बेनिफिट्स देने हैं, वो क्या एम में रख के देने हैं. सो ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, वेलफेयर स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, and they will be able to formulate policies better and also aid national security. National security भी बहुत important issue है, right? And it will help to target government beneficiaries in better way, and also further cut down paperwork and red tapeism in similar manner. Red tapeism बहुत बार ये चीज देखी गई है. In fact, recently in several states it was noticed, जब गवर्नमेंट डेटा चेक किया गया था, तो कई स्टेट्स में ऐसा निकला था कि बेनिफिशरीज फेक बेनिफिशरीज दिखा दिए गए थे, उनका फेक डॉक्यूमेंट एंड फेक बेनिफिशरीज लिस्टेड थे, बट और उनके जो बेनिफिशरीज का जो अमाउंट मिल रहा था वो कुछ पर्टिकुलर लोग थे वो बेनिफिट ले रहे थे इलीगली, देवर और बहुत सारे करोड़ों करोड़ों लोग फेक नेम्स एंड फेक बेनिफिशरीज. तो ये सारी चीजें कट डाउन हो जाएंगी, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी अगर एनपीआर को अब वापस से एनपीआर को स्टैब्लिश अगर ऑनलाइन कर दिया गया तो ठीक है. इट विल हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द आइडिया ऑफ वन आइडेंटिटी कार्ड. सो आइडिया ऑफ वन आइडेंटिटी कार्ड, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने यूएस से लिया है. यूएस में यू विल सी दे हैव दिस ID card, they have this particular information card with everyone, and they have this unique number, security number एक उनका होता है हर एक इंडिविजुअल का, हर एक सिटीजन का यूएस के. एंड उससे उसके हेल्थ इंफॉर्मेशन भी निकाली जा सकती है, उससे उसके इंश्योरेंस रिलेटेड उससे बहुत सारी डिटेल्स उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी नंबर से निकाली जा सकती है. सिमिलरली इंडिया में भी क्या होगा, विद दिस सिक्योरिटी नंबर, विद दिस वन आइडेंटिटी कार्ड, राइट, जो भी ड्यूप्लीकेशन हो रहा है, जैसे आधार का ड्यूप्लीकेशन बहुत इजीली हो पाता है, वोटर आईडी, बैंकिंग कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें कर्व हो जाएंगी एंड पेपर वर्क कट डाउन हो जाएगा, एंड जो फेक बेनिफिशरीज वाली चीज होती है वो सब भी खत्म हो जाएगी. NPR is the first step towards compilation of National Register of Citizens. So NPR से क्या होगा, it will also go on to NRC यानी National Register of Citizens. और कई बार पता है क्या होता है कि जैसे इलीगल माइग्रेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर वेस्ट बंगाल में बहुत नोटेड है, वेस्ट बंगाल, आसाम जो ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे बांग्लादेश से बहुत ज्यादा माइग्रेशन होता है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यू विल सी लॉट ऑफ इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम म्यांमार. देन इन द वेस्टर्न स्टेट्स लाइक राजस्थान यू विल सी लॉट ऑफ इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान. उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, कभी कभी वो लोग फेक आईडी कार्ड्स बना लेते हैं, और फिर गवर्नमेंट और फेक वोटर आईडीज, फेक आईडी कार्ड्स, ये सब चीजें होती हैं, और उसके बाद वोटिंग जो वोट पैटर्न है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज आप वोटिंग भी उससे अफेक्टेड होती है, इलेक्शन भी अफेक्टेड होते हैं, राइट, एडवर्सली इफेक्ट्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो and yes, there have been certain instances wherein the state governments have actually used such illegal migrants to vote in favor of a particular party. तो ये भी देखा गया है. So that is also not good for a democracy, right? Okay. All right. So then we have, and this is basically legally backed by the Census Act. We have a Census Act of 1948.
Okay. And NPR is mechanism outlined in a set of rules framed under the Citizenship Act of 1955. ये तो हमने बात कर लिया. ठीक है. Citizenship कैसे provide होती है? It can be provided on the basis of birth. It can be provided on the basis of descent, registration, naturalization by incorporation of a territory into India. ठीक है. We will discuss that when we'll discuss citizenship, particularly. But for you, it is important to know that what is NPR. ठीक है. We will take a session. जो ऐसे कोई days होंगे ना जब let's say newspaper जिस दिन नहीं आता है, holiday, national holidays के immediate बाद वाले days में, we will discuss about the Citizenship Amendment Act 2019. ठीक है. What it is about and other important concepts. Okay. ठीक है. And this also NPR to enumerate self during next census. So ये these two news items are actually related. And the next is Delhi High Court issues notice to BBC on its documentary. So the Delhi High Court on Monday issued notice to British Broadcasting Corporation on NGO's plea claiming the documentary India, the Modi Question casts a slur on reputation of India and makes false and defamatory imputations against Prime Minister Narendra Modi and the Indian judiciary, because Supreme Court has already given clean chit to Prime Minister and Amit Shah and various other people who were allegedly responsible for the 2002 this thing crisis in the Gujarat, right? Apart from the national broadcaster of the UK, Justice Sachin Datta also issued notice to the BBC on a petition by the NGO Justice on Trial against the documentary relates to the 2002 Gujarat riots. The High Court has posted the case for further hearing in September. Then the NGO, represented by senior advocate Harish Salve, contended that the BBC had released a two-episode news documentary. The two episodes are started to have been published in January 2023. The NGO contended that the documentary contained content which casts a slur on the reputation of the country and also makes false and defamatory imputations and insinuations against the Prime Minister of India and the Indian judiciary and the Indian criminal justice system. Okay. Now, let's see what is defamation then. This is important from your IPC criminal law point of view to understand what is defamation. Defamation is both a civil as well as it's a civil wrong as well as a criminal wrong. It's a criminal act as well. So it can be civil defamation or a criminal defamation. Defamation is defined IPC में कहाँ पे defined है under